Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, in this last part, I will tell you how to handle normal distribution cases and how to find the probabilities of x instead of z. अभी तक हम लोगों ने probabilities of z calculate की हैं and obviously we have observed some quantiles in the form of z. बट यहाँ पर हमेशा z नहीं होता, हर बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन की 1 नहीं होती. There are some cases, many other cases in which we are having different values of mu and sigma. So starting with the beginning, it is the distribution of BMI, BBA3 2016. In the year of 2016, I took one class of SI, two sections obviously. So I brought the weighing scale and the measurement scale to get height of students. तो एक एक्टिविटी मैंने लॉन्च की थी, उसमें काफ़ी ट्रबल हुई बट आई सक्सीडेड टू ऑब्जर्व द वेट्स एंड द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. जो BBA3 के स्टूडेंट थे उनकी हाइट्स और उनके वेट्स मैंने ऑब्जर्व कर लिए एंड देन फाइनली आई कंप्यूटेड BMI, जो मैंने इसी लेक्चर सीरीज के पार्ट 2 में मेंशन कर दिया कि किस फार्मूले से BMI को कैलकुलेट किया है. तो आफ्टर गेटिंग द रीडिंग ऑफ BMI I observed this frequency distribution. जो सैंपल मेरे पास आया था उसकी frequency distribution ये आई थी and BMI are written in the form of midpoints or class marks. And similarly, I have observed the histogram as well. Since this histogram seems to be a bit positively skewed, but due to approximation error or sampling error, we can consider this is closer to a normal distribution. एक normal distribution का case इस तरह के हिस्टोग्राम पे भी बन सकता है. थोड़ा सा एरर आएगा बट मार्जिनल एरर जो होता है वो अगर सैंपल को इंक्रीज कर लिया जाए या ज़्यादा कर लिया जाए तो उसकी रीडिंग अच्छी हो जाती है. तो फिलहाल ये हिस्टोग्राम है और हम इस हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद वी कैन से दिस डेटा इज फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Data seems to be following a normal distribution. So we are ready to handle some cases regarding student health. तो exploratory data analysis भी मैंने conduct किया इसका. And what is exploratory data analysis? It is the study which was introduced by Sir John Wilder Tukey, uh, and the weapon he used to analyze the data was a graph, and that graph was said to be the box plot. So by segregating the data of male and female students, I have presented a box plot. In this picture, you can see BMI of female student. It seems a bit lower than the BMI of male students, and although this difference is not a significant difference, अगर हम T-test वगैरह जो कि हम आगे कंडक्ट करेंगे, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट आप इसे 19-20 का फर्क कह सकते हैं. तो BMI ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज लोअर, कंपैरेटिवली लोअर. इट इज शोइंग के फीमेल स्टूडेंट के अंदर ये थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है कि वो स्मार्ट लगें बॉयज़ के मुकाबले में. तो ये बेसिकली ये हीपिंग है, बट इट शुड बी 18 एज फार एज 18 ईयर्स ऑफ एज इज कंसर्न सिमिलर होना चाहिए. BMI काफ़ी सेम होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स का, ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं. तो नाउ how we can convert this into a normal distribution case. So for this purpose we need to have some know-how about the body mass index. So it is already mentioned in part 2, but here it is written, it is presented in a written form. BMI is a measure of body fat based on the individual's weight in relation to her height, and applies to most adult men and women aged 20 and over, for children aged 2 and above. So the parameters I received, I observed, estimated from the sample of the students of BBA. So I got the reading of mean is equals to 22 kilograms per meter square and sigma is equals to 4 kilograms per meter square. And now see the slabs introduced by WHO. So weighing categories as designed by WHO has been presented like this.
in which this less than 15 is showing very severely underweight, and underweight category is just started from 18.5 or lower, and 18.5 to 25 kilograms per meter square is set as a standard or the normal healthy weight. And if it is getting higher from 25, so the weighing category is becoming higher: overweight, obese class 1, class 2 and class 3 for more than 40. Now what should be the question? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस तरह का आएगा? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स of Karachi. I'm inferring from the sample of IBA, since IBA is in Karachi, so we can infer about the students who are studying undergrad from different universities of Karachi. What is the probability or proportion of getting a BMI 18.5 kilograms per meter square for a student who is who is doing undergrad studies? So this is not Z, this is X. Okay, so last time we solved it by using the table directly, but here if we are intending to use the table, so we cannot go through the table directly, but to convert after converting this X into Z, it will be possible. So remember the Z transformation I told you. Again, and the Z transformation was Z is equals to X minus mu upon sigma. So basically what we are going to do, we are going to convert our X into Z on both sides. If we are going to use this transformation on the left hand side, we have to do the same on the right hand side. So X minus mu upon sigma will become 18.5 minus mu upon sigma, but on the right hand side we are going to use the empirical approach. On the left hand side we are using the theoretical approach. X minus mu upon sigma less than 18.5 minus mu is 22 divided by sigma is 4. So what is the result of 18.5 minus 22 upon 4? This will be our desired quantile or Z score. Yes, it is minus 0.88. Now rest is simple, which you have already studied in the last slides, in the last lectures. Minus 0.88 per less than ka area, either you observe from the table or you can see from the online calculator, and the result is GERD 0.18943, means approximate 19%. So what we have inferred regarding the student, the undergrad student of Karachi. So now we can use these lines as our research. Okay, according to a recent research, we can conclude that 19% students in Karachi, undergrad student, seems to be underweight. ये study हो गई अब. इसी तरह, now determine the proportion of normal students 18.5 to less than X less than 25 is equals to. Now I am not going to show you the answer of this, but I believe you can use the theorem of finding probabilities within an interval. So how you can proceed? Yaqinan, probability of X is less than 25 minus probability of X is less than equals to 18.5. You can do it. अब यहां पर इन दोनों का एरिया आपको ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में निकालना है. एंड फाइनली डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ ओवरवेट स्टूडेंट्स. ओवरवेट स्टूडेंट्स क्या थे WHO की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग? यकीनन X is greater than 25. So in order to solve this, we have to use the gadget 1 minus probability of X is less than equals to 25. तो यहाँ पर ऑलरेडी आप ये 25 से लेस मालूम कर चुके होंगे, वही रीडिंग रखिएगा, 1 में से माइनस कीजिएगा एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. इसी तरह अपनी रिसर्च को हम लोग एडवांस करते रहते हैं. अब इसके बाद फाइनली वो तो मेडिकल का केस था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग. जो हमारे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं वो किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ले सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम इनकम टैक्स, रेज सम इनकम टैक्स एज वेल. आपको तो पता है क्लासेस होती हैं इनकम टैक्स की, तो हर क्लास पे लगाया जाता है इनकम टैक्स. तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे दे हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं दे आर अर्निंग रुपीज 120K per month, and the standard deviation between their wages seems to be like 30K.
तो 1,20,000 रुपए इनका मीन और 30,000 रुपए इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड दे आर assuming that the data is following the normal distribution. Then determine the following proportion of measure who are earning below 60K. सबसे पहले आपको इसका रिजल्ट निकालना है using the online calculator. Again, I am not helping you because I want to give you some stretch, not stress, stretch to struggle for the solution. और मुझे पता है ये बिल्कुल आपसे हो जाएगा. Below 60K का means if you are going to remove this K, so you just go for mu is equals to 120, sigma is equals to 30. Below 60 means probability of x less than 60, and above 130 means probability of x is greater than 130, and between 70 to 140. And finally, here we have a proposal. Our proposal ये है कि if additional tax is being implemented on those who are earning above 180K, then find the proportion who lies in this slab. So after getting the area above 180 using the online calculator, and what is the value of mean you will use over there? Yes, 120 and standard deviation 30. Area above 180 and you can get the result. And I hope that you will get the right result. And now I am giving you some exercises for your practice. These exercises are already given to you in the fourth part, last part, and exercises 6.3 are all about cases. वो जो x की probabilities हैं जिन्हें z scores में convert करके solve करना है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी. And the book is the same, Introductory Statistical Analysis by Neil Levy's 9th edition. So this book is available on Google. You can download it from Google as well and also from pdfdrive.com. ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस बुक में आप क्वेश्चंस देखें. आई होप कि मैं किसी हद तक आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके केसेस को पढ़ा पाया हूँ. इफ आई डिड इट करेक्टली तो मुझे आप लाइक कर सकते हैं वीडियोस को. अदरवाइज यू कैन गिव मी सम सजेशंस इन द कमेंट्स. तो आपकी वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं उनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.